God will go into the word of God. We're in the book of Ephesians. हम Ephesians की पत्री के अंदर थे because we finished the book of Hebrews. हमने Hebrew को खत्म किया था and we are in the book of Ephesians. Who wrote the book of Ephesians? Paul, right? हमने ये देखा था कि पॉल कब ये पत्री को लिखता है. He is writing this. It is believed that he wrote this book of Ephesians during his first imprisonment, जब वो पहली दफा रोम के अंदर कैदी बनाया गया उस समय के दौरान around 62 AD. So if Jesus died and he rose from the dead around 30 or 33 AD, depending upon how you calculate it, but उसके कम से कम 30 साल के बाद within 30 to 32 years, 32 साल के अंदर Paul is writing this letter. Paul probably he did not establish this church in Ephesus. Probably it was already there when Paul visited. जब उसने visit किया तब ये church probably already था. We can say that because what is the background of this book of Ephesians? Church Ephesians की कलीसिया का background कहाँ पर हम देखते हैं? Where do we see the book of Ephesians before the letter? Acts, प्रेरितों का किताब. What chapter? Chapter 19. उसका 19वां जो अध्याय है प्रेरितों का किताब. That whole chapter is about the church in Ephesus, right? वहां पर हम देखते हैं. Maybe next time I will show you a couple of archaeological evidence. पुरातत्व शास्त्री. What are the evidences that we have from the church in Ephesus? That is in modern day Turkey. आज का जो Turkey है, that was called Asia Minor, and that is where all this church, right, including Ephesus, Smyrna, Pergamon, जो 7 कलीसिया जिसके बारे में Revelation के अंदर लिखा है प्रकटीकरण, those churches were literal churches in Asia Minor, that is the modern day Turkey, and we can see some of the evidences that still there. For example, in Acts chapter 19, प्रेरितों का किताब उसका 19वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं, there used to be a theater, एक बड़ा थिएटर वहां पर हुआ करता था. That theater is not to watch movie, वो मूवी देखने के लिए नहीं है. That is where the people will come and debate over several topics. जो सिविल टॉपिक है और किसी को कोई बात अपना प्रस्ताव किसी चीज के लिए रखना है, then they will go to the theater और वहां पर सारे लोग इकट्ठा हो गए and then they will debate over the topic. So that is the theater. That is you can see the ruins of this theater. उसके जो अंश जो है अभी भी you can go and visit that. That is in Ephesus. Ephesus was known for magic. जादूगिरी वहां पर हुआ करती थी, and you can read that in Acts chapter 19. जब वो जादू की पुस्तकें मंगाई गई तो एक बड़ा ढेर वहां पर लग गया, right? And they used to believe in magic. What else? The people when Paul went there were few people who were baptized. कई लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग थे. जब पॉल वहां पर जाता है, पॉल उनको पूछता है, तुमने किसका? Did you receive the Holy Spirit? जब तुमने क्या पवित्र आत्मा जब तुम बपतिस्मा लिया क्या तुम पाए थे? So there they said that no, we did not receive. We have not even heard of the Holy Spirit. हमने पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना है. And then Paul had to teach them and baptize them. And then when he laid his hand, जब उसने अपना हाथ उनके ऊपर रखा, they started speaking in tongues, and that is where we see that they received the Holy Spirit. Then there are several other stories that you can read in Acts chapter 19, but that is the background of this book. ये Ephesians की पत्री का जो background है, that we see in Acts chapter 19. हमने ये भी देखा था, they were prosperous. वो धनवान लोग थे जो यहाँ पर रहते थे. And the part of the reason is because of the Ephesus geographical location. जो Ephesus जो है वो it is by the shore, and उसकी जो location है वो that can attract many the ship and you know ये जो traffic जो वहाँ पर, so lot of trade going on from Ephesus. Ephesus lot of business that was coming into Ephesus, and that is why Ephesus people were prosperous. They may be thinking that we don't need God, right? Because this was a polytheist culture. ये बहुत सारे देवी देवताओं में मानते थे, and वो सोचते थे कि अब हमारे पास इतना पैसा है, we have lot of wealth,
and we don't need wealth. And that is the background of this Ephesians chapter 1, where Paul is trying to explain them that what are your real blessing. Paul उनको सिखाता है कि सही माने में तुम्हारी आशीषें क्या है. And that is the background that we see. Now this Ephesus was also known for the temple of Diana. Diana नाम की एक goddess है, and वहाँ उसका temple, and there were a lot of female devotees. उसकी जो भक्ति है करने वाली बहुत सारी स्त्रियां थी जो टेम्पल में काम किया करती थी. And that is also a big other thing because lot of people were making money. कई लोग उससे पैसा बनाते थे क्योंकि वो Artemis और so there are two names, Artemis and Diana. Diana is a Roman name, Artemis is a Greek name. Two different goddess, similar type of a thing. But उसकी जो मूर्तियां बनाकर लोग बेचा करते थे सोना और चांदी के, and that is how they used to make profit. But when Paul started preaching in Ephesus, जब पॉल ने जाकर एफेसस में प्रचार करना शुरू किया, उनका वो बिजनेस बंद हो गया. And that was part of the reason that there was a riot that happened in Ephesus. You can read that background in Ephesians chapter 19. So we started this chapter. किसी को याद है what was the last topic we saw? क्या आखिरी बात हमने पढ़ी थी एफेसियंस की पत्री से? Which verse we were in? Anyone? So we were in verse 5. उसका 5वां वचन के अंदर थे, right? Because you see the background of this chapter 1 is verse 3. कोई भी एक व्यक्ति पढ़े उसका 3रा वचन. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है. राइट? He has given us all the blessing. Who has the blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in Christ. So हम क्या देख रहे थे? What was the thing that we were saying? What are those spiritual blessings? वो आत्मिक आशीषें कौन सी है? And the first one, जो पहली हमने देखी थी, that is in verse 4, that he chose us. परमेश्वर ने हमें पसंद किया. किस चीज के लिए पसंद किया? We see the reason also. If you finish the verse 4, वो कहता है to be holy and blameless before God. हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष हो. Then verse 5, वो भी हमने आधा देखा था. Please read verse 5. और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो. So परमेश्वर ने अपनी इच्छा के पहले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया. So that is the part that we saw about predestined, that God has predestined us. परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है. And we saw a couple of reasons why God has predestined us. क्यों? किस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया? One of the reasons we are going to see today, that is the part of that verse 5. You see that it says, having predestined us unto adoption of children by Jesus Christ. परमेश्वर के ले पालक पुत्र होने के लिए हमें उसने पहले से ठहराया है. But we saw a couple of other reasons from Romans chapter 8 verse 29, और वहां पर दिखाया why God has predestined us. परमेश्वर ने हमें क्यों पहले से ठहराया है? To be in the image of his son, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो. That means that every single day that God gives us, परमेश्वर जो हमें हर एक दिन देता है, we need to be in the image of his son. हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो. That means that we become more holy and come closer and closer to God. And that is what God expects from you and me. And that is why God has predestined us. जब हम ठहराए जाने के बारे में देख रहे थे, we saw a couple of verses where we can see that God's sovereign will is always done. परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमेशा पूरी होती है. That doesn't mean that we are predetermined
and we saw some verses that shows the free will of God. हमारी अपनी इच्छा, परमेश्वर ने अपनी, he has given us a free will. परमेश्वर ने आपको अपनी choice दी है, and you can decide. God is leaving that decision to accept him or reject him. क्या आप परमेश्वर को अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं? That God has given to you and me, but God also has a his will, and we saw that his will is always done. For example, we saw, I'll give you 3 verses, and we're not going to see all those verses we already saw, but just go to John chapter 6 verse 44. यूहन्ना का किताब chapter 6 verse 44. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उससे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. कौन, who is speaking? ये कौन बोलता है? Jesus is speaking. यीशु कहता है, राइट? कोई मेरे, no man can come to me, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले. So that means, ये वचन को आप अकेले पढ़ोगे तो you will see that only and until and unless God draws you near, you cannot. That is true. Until and unless God doesn't draw you near, you cannot come to him. And then Jesus said, I am going to give him an eternal life. Now go to Acts chapter 13. Acts chapter 13. And verse 48. प्रेरितों का किताब उसका 13वां अध्याय और उसका 48. यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई. So Paul preached among the Gentiles. उसने अन्य जाति के प्रचार किया, and those who heard the message, जिसने पॉल का प्रचार सुना, they were glad. वो सुनकर. Now read the second part of the verse. और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास. जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया. So if you read this verse, you can see that it is probably God predetermined, and only the one जिसको ठहराया है, only those people will believe. But that is not the case. You see, it says that those who are, as many as were ordained to eternal life, they believe. Now I'll give you other part of the verse, that is in Romans chapter 9. Go to Romans chapter 10. रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय. Please read verse 13. उसका 13 वचन को पढ़े. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा. Those who call upon the name of the Lord, he will be saved. So that means that, and then if you read verse 9 in the same chapter, वो कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा. So of course God's will is always done. What is the God's will? परमेश्वर की इच्छा क्या है? That all man to be saved. हर एक व्यक्ति उद्धार पाए. कहां लिखा है ये? घर में जाके ढूंढना. It's in Timothy. That all men to be saved. Does that happen all the time? Does everybody get saved? Everybody will be in heaven? No. No, because there will be few people who will choose to accept. तो कई लोग होंगे जो उसके वचन को ग्रहण करेंगे, उसको अपनाएंगे, उद्धार पाएंगे, but there will be few people who will reject him. Right? So that is what verse 13 would say. उसका 13 वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा. So you, in God's word, वचन के अंदर you will see both type of verses. One type of a verse would say everything is predetermined by God, and then one type of the verse would say there is a free will that God has given to you and me. परमेश्वर ने मुझको और आपको एक free will दिया हुआ है, and you choose to accept or reject him. Now coming back to Ephesians 1:5, and we will finish the second part of the verse.
क्यों उसे लिखा है, उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम ले पालक के पुत्र हो, दैट वी कैन बी अडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के हम पुत्र और पुत्री हो. सो व्हेन यू सी द adoption, why first of all Paul took this concept of adoption? If you look at the adoption, you will see many places in the New Testament Paul uses the adoption concept. It is because in the Roman culture the adoption was taken, it was a legal process. उस टाइम समय के दौरान रोमन कल्चर के अंदर अडॉप्शन जो था, it was a legal transaction. Someone who is adopted, जिसको अडॉप्ट किया जाता है, he gets some privileges, at the same time he has some responsibilities. आपको किसी ने अडॉप्ट किया है, now you become part of the new family, right? You come out from that old family. जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, वहां से आपको किसी ने अडॉप्ट किया है, यू आर इन द न्यू फैमिली. आप एक नई फैमिली के अंदर जाते हैं. दैट न्यू फैमिली हैव देयर ओन रूल्स, राइट? उनके कुछ अलग नियम होंगे. जो आप अपने घर में करते थे, आप वो घर में नहीं कर सकते, राइट? यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ दैट न्यू फैमिली, राइट? So you have some responsibilities, at the same time you have some privileges. हो सकता है जब कोई पहले घर में थे, बड़ा गरीब घर था, मे बी 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, but this new house is a palace and you get all the privilege, but at the same time you have to abide by this new house and the rule of this house. Similarly, when Paul uses the word adopted, he is taking that concept from the Roman culture. उस समय in the 1st century, this was a very popular. People were getting adopted into the Roman houses and they get privileges, but at the same time you have some responsibilities. Now the fundamental, the basic concept of adoption, you can see that in Galatians chapter 4 verse 4 and 5. गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 4 और 5 वचन, that is the basis of adoption. ले पालकपन के बारे में उसका जो फाउंडेशन है, that is in this verses. Please read verse 4 and 5. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले. So in the fullness of time, verse 4, वो कहता है जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा. Who is he talking about? Jesus, right? He came in the fullness of time, born of a woman. Then वो कहता है व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, born under the law, born in a Jewish family. Then ताकि व्यवस्था के अधीन को, that means the Jews, those who are under the law, उनको मोल लेकर, to redeem them, छुड़ा ले और हमको ले पालक. So to the Jews to redeem them, and then साथ ही साथ में कहता है हमको, to the Gentiles, we also can be adopted in the family of God, right? जो कि हम उस परिवार का हिस्सा नहीं थे, because in the Old Testament who got the law? किसको नियम मिला? To the Jews, right? Who had a privilege to worship? Jews, right? Who are the people of God? The Jews, right? They were called the chosen generation. जो पसंद किया हुआ जाति था in the Old Testament were the Jews. But we, Paul is saying, जो हम जो है, we can receive the adoption of son, ताकि हम उसके पुत्र या पुत्री बन सके. Now जैसा मैंने शुरुआत में कहा, when you are adopted in the family, you have some responsibilities, at the same time you have a privilege. What is the privilege? आपको क्या हक मिला because you are adopted? Read the
few other verses. Read verse 6, same chapter. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। Because you are a son, this is your privilege, that he has given his spirit, and now you can call God Abba and Pita. See, this concept also, I mentioned that on the day of Father's Day. Remember, there are 3 verses in the New Testament that specifically talks about Abba, and that Abba word always followed by Pita. There are 3 verses in the New Testament. 3 जगह के ऊपर आप देखते हैं this word Abba is used. That is a typical Aramaic word. Jesus would have called his father Abba, and that is where this is coming from, Abba. One of them is in Mark chapter 14 verse 36, when Jesus was in the garden of Gethsemane. जब वो garden of Gethsemane के अंदर है, he is calling God Abba, Father, right? He is saying that परमेश्वर, मेरा इच्छा नहीं पिता, तेरा इच्छा पूरा हो. अगर तेरा इच्छा है तो ये take this cup from me, but not my will, but your will be done. That is one. The second one that you see Abba is in here in Galatians chapter 4. Paul is using that. The third one we are going to see today, that is in Romans chapter 8 verse 15. And these are the 3 places where the word Abba, a typical Aramaic word for the father, is used, and that word is followed with father. Pita, Abba and Pita. You will see these 2 words going together. So what is the privilege? वो कहता है जो हमें अब्बा पिता कहकर पुकारता है. Read the verse 7. इसलिए तू अब Galatians 4 verse 7 वो कहता है इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है. You see, you came out from this family, you were slave, तुम पाप के दास थे, but now you are adopted in the family of God, and this is your privilege. अब तू दास नहीं, तू कौन है? You are a son. And if you are a son, जब तू पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है. You are now inheriting whatever that God has, that inheritance. तू परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है. You see this similar type of concept in Romans chapter 6 verse 22. Go to Romans chapter 6 verse 22. Romans 6 उसका 22वां वचन. क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल. You see, you were in the family, or you were part of that उस जगह में तुम थे, वहां पर that the end is death, उसका अंत मृत्यु था. बट नाउ वो कहता है क्योंकि उसका अंत मृत्यु है, पर अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर, सो नाउ यू आर अडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ गॉड. नाउ यू आर what you are a servant of God, right? It is better to be the servant of God rather than in a sin. तुम पाप में रहने से अच्छा है तुम परमेश्वर के दास बन रहे. कई लोगों को this word दास और सेवक उससे प्रॉब्लम होता है because they think that as if you are a slave. It is better to be the slave of God rather than to die in sin. The word sevak or das, that word is a Greek word doulos, and that is where Paul took this word das. But if you read couple of introduction of Paul's book, Paul के कई लेटर के अंदर आप देखोगे तो उसके जो beginning है, you will see that Paul introduces himself as I am a servant of God. वो कहता है मैं परमेश्वर का दास हूं. You go home and read couple of letters written by Paul. You have 13 letters written by Paul, and you will see the beginning, the way he introduces him is that he will say that I am a servant of God. So you see that it वहां पर कहता है तुम पाप से स्वतंत्र होकर
परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. That you receive the eternal life. That is the privilege that you have if you are a child of God. अगर तुम परमेश्वर का बेटा और बेटी है, then that is the privilege that you get from this new family. Now, adoption is a concept you see both past, present and future tense. भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल. In all these things, you can see the concept. One of them, go to Ephesians chapter 2 verse 3. Ephesians की पत्री, दूसरा अध्याय, उसका तीसरा वचन. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे. So that was your past. ये तुम्हारा भूतकाल था. पॉल कहता है हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, जो शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान से. तो दैट वाज आवर पास्ट. वो हमारा भूतकाल था. Who were we? हम कौन थे? Paul is saying that we were the children, the sons of wrath. That is the past. Now go to Ephesians chapter 5 verse 8. Now if you are not yet a child of God, these verses are for you. अगर अभी आप परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं बने हैं, that means you are still sons of wrath. अभी भी तुम क्रोध के संतान हो. Why? Because the wrath of God abides on those who do not obey God or those who do not receive it. जब उस वचन को सुनने के बाद भी अगर उसको ग्रहण नहीं करते, if you read Romans chapter 2 carefully, then it says that the wrath of God abides on those. परमेश्वर का क्रोध. You see, last week हमने cottage meeting, what was the subject? कॉटेज मीटिंग में बिंदु बहन के घर में कौन सा सब्जेक्ट देखा था? रोमन्स 1 from 18 to 21. What does Romans 1:18 says? उसका 1 का 18 में क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर रहता है जो सत्य को सुनकर वो सत्य को दबा देता है. So the wrath of God is still on you. If you are still in your sin, आप अभी भी वो पाप का गुलामी में है, अभी भी उसका बेटा और बेटी नहीं बना है, then this is for you. Now read verse 5 and chapter 5 verse 8. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे. पहले तुम कौन थे? अंधकार थे. You were in darkness before the light of the gospel. ये सुसमाचार का प्रकाश तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा, तब तक तुम अंधकार थे. Continue reading. परंतु अब प्रभु में ज्योति हो. Now you are in light. Now you are. This is your present. See, adoption is in the past, present and future tense. What is the past? You are the sons of wrath. You are in darkness. तुम अंधकार में थे. Now you have heard the gospel. Now in the light of Jesus Christ, तुम यीशु का ज्योति में हो. Then what is expected of you? You see, adoption comes with rights and privileges. At the same time, you have some responsibilities. What is the responsibility? Complete the verse. Walk as the children of light. If you are in light, walk as a children of light. If you read the next verse, please read the next verse. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. So the goodness and righteousness and the truth that should come out from your action. वो तुम्हारे स्वभाव में दूसरे को दिखना चाहिए. That Christ, what did Jesus say? I am the light of the world. What is the next part of that verse? कहां पर आता है? I am the light of the world. Where do you see light? Jesus said, I am the light of the world. John 8:12. Open John 8 verse 12. Read the second part of that verse. I am the light of the world. Then what is the second part? You will see that this is similar to Paul's teaching in Ephesians 5, 8 and 9. और यीशु ने फिर लोगों से कहा,
जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा those who follow me, he that follow me, वह अंधकार में न चलेगा, he is no longer walk in the darkness, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, but shall have the light of life. You see the similarity between the teaching of Jesus and the teaching of Paul? What did Paul said? We were the children of darkness. हम अंधकार के संतान हैं. But now that you have received the gospel, walk in the light of Christ. When Jesus said, I am the light of the world, जगत का ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. Now go to Colossians chapter 1 verse 13 and 14. You will see that Paul is in his letter, he is emphasizing this again and again, and that is because it's important. This adoption, the concept of adoption. Who were we? हम पहले कौन थे? Now what are we in Christ? Please read verse 13 and 14. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने, that means who is Paul talking about? किसके बारे में वो कह रहा है? Jesus, right? Who has delivered us from the power of darkness? Who delivered us from the power of darkness? यीशु ने, right? Continue reading. And उसने has, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश that कराया. is our privilege. We are now in the kingdom of God. हम परमेश्वर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया. Continue reading verse 14. जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो. This is what we received if we became the child of God. If we are adopted in the family of God, Paul is saying that in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sin. This is our present. Now go to John, 1 John chapter 3, verse 10. पहला यूहन्ना chapter 3, verse 10. इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं. So these are the two clear distinction. There is a clear separation between the children of God and the children of the devil. वो कहता है इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, we can differentiate that. Continue reading. जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता. So the things that you should do as if you are a children of light, अगर तुम ज्योति के संतान हो, if you are a child of God, the character that you should have, if you do not have it, then you are still a child of devil. वो कहता है तुम शैतान का संतान हो. So what was our past? हमारा भूतकाल क्या था? Before we were adopted, Ephesians 2:3 उसमें क्या लिखा था? We were the children of wrath. हम क्रोध के संतान थे. Then in Ephesians 5:8 we were the children of darkness. हम अंधकार के वश में थे. Then in 1 John chapter 3 verse 10 क्या कहता है? हम शैतान के संतान हैं. Right? Now what is our present? If you read 1 John chapter 3 verse 1, please read the chapter 3 verse 1, उसका पहला वचन, उसका 10वां पढ़ा ना, उसका पहला वचन पढ़े. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी. So God loved us. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us because it knew him not. And वो कहता है we और हम है भी, हम परमेश्वर की संतान. So that is your present position. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं, then you are a child of God. Same thing John says in his gospel. Gospel of John chapter 1 verse 12. क्या कहता है वो? किसी को बाई हाथ है? यूहन्ना 1 और उसका 12. As many as those who receive him.
Read that. 2000 called. So what do you have to do in order to be the child of God? अगर उसका बेटा और बेटी बनना है, the first thing John says is that as many as those who received him, received who? Jesus as a Lord and Savior, those are the ones who can be called as a child of God, because God gives them a privilege to be his sons or his daughters. So that is the first thing that needs to happen. Now go to Romans chapter 8 verse 15. Now we are looking at the present, okay? Adoption in the past, adoption in the present, and we are also going to see adoption in the future. So this is the present. Read verse 8, chapter 8 verse 15. By the way, this is the second time you see the word Abba is used in this particular verse. I said there are 3 in New Testament. This is the second one. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं. So because of this adoption, now that you are adopted in Christ, वो कहता है तुम्हें, you have received the spirit of adoption. So that is also another important thing, that you need to be receiving this spirit, that spirit of adoption, thereby cries Abba, Father. Read the next verse, verse 16. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान. So who are we now? We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान है. So the past, the present, right? Present में हमने ये भी दिखा था, Ephesians 5:8. उसका दूसरा पार्ट क्या कहता था? तुम अंधकार में थे, बट अब तुम ज्योति के संतान हो. Now you are the children of light. Similarly, 1 John 3:10 में क्या लिखा था? You are the sons of devil, but now you are the sons of God. अब तुम परमेश्वर की संतान हो. Now what is the future of this adoption? Same Romans chapter 8, read verse 23. रोमियो का पत्री उसका 8 और verse 23. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं. So this is something for the future. Why this is future? क्या कहता है पॉल? क्या कहता है? And not only they but ourselves also, हम भी, वो कहता है which have the first fruit of the spirit. If you have believed, received Jesus Christ as a Lord and Savior, now if you are in Christ, then वो कहता है जिसके अंदर वो आत्मा का फल है, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption. So we were Gentiles, हम अन्य जाति थे, we were adopted in the family of God. When we received Christ, हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, we received him, we became the child of God, हम उसके संतान बने, we received the spirit of God, जिस प्रकार Romans 8 उसका 15 और 16 में पढ़ा, that spirit now crying Abba and Father. So you have the spirit. Now he is saying that those who have the first fruit of the spirit, जिसको आत्मा का प्रथम फल मिला, you are still waiting for the future adoption. तुम भविष्य में होने वाले उस adoption. What is that adoption? That is the redemption of your body. तुम्हारा देह से छुटकारा, right? ये सब कुछ हुआ, you received Christ, but that is in this body. You are still in this body. तुमने यीशु को अपनाया, आपका प्रभु करके, before you were baptized, then you took the water baptism, आपने पानी में बपतिस्मा लिया, you received the Holy Spirit, आपने उस पवित्र आत्मा का फल को पाया, but you are still in this body. This is a corrupted body, cursed body that we see in Genesis. उत्पत्ति का किताब में हम देखते हैं, हम अभी भी we are in the likeness of sinful flesh. इस पाप में शरीर में, this body is decaying,
द बॉडी गेट्स हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये सारे रोग अभी भी इस बॉडी के अंदर लगते हैं. बट वी नीड अ बॉडी विच इज अ ग्लोरियस बॉडी लाइक जीसस क्राइस्ट. तो यीशु का माफिक हमको भी एक रेजरेक्शन बॉडी चाहिए. एंड दैट इज व्हाट पॉल इज स्पीकिंग अबाउट, दैट वी आर वेटिंग फॉर द अडॉप्शन. हम ले पालक होने की राह देखते हैं. एंड दैट इज द रिडेम्पशन ऑफ दिस बॉडी. ये शरीर में से छुटकारा, to receive the glorious body, वो हम पाना चाहते हैं. Now, the basis of this adoption is not because, if you read that Ephesians 1:6, we will see that also. Ephesians 1:6. कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सैंत में दिया. So all this blessing that God is giving us is not because of your own merit. वो आपको कोई अच्छा काम की वजह से नहीं है. Remember, एक beggar जिसको रॉयल गाउन पहनाकर राजा के पैलेस में राजा के टेबल के ऊपर खाने मिलता है. That beggar does not bring anything with him. वो जो भिखारी है जिसको राजा के टेबल पे खाने का मौका मिला है, वो भिखारी अपने पास कुछ लेके नहीं आता है. The king doesn't need anything of him. He is there sitting on his table only and only because he is wearing that robe. जो राजा ने उसको जो कपड़ा पहनाया है, उस कपड़े को पहनकर राजा के टेबल के ऊपर से वो भोजन जो राजा खाता है, वो खाने का जो उसको अवसर मिला है, that is purely based on the grace of the king. वो राजा का अनुग्रह उसके ऊपर है, because that king made a favor on this beggar, and that is the only reason. That is what Paul is trying to explain, that you have all the spiritual blessing. ये सारी आत्मिक आशीष है, not because you brought something to the table. तुम कुछ लेके नहीं आए, not because of your good works, तुम्हारे अच्छे काम की वजह से नहीं. It is only and only if you are wearing that robe of Christ. अगर वो मसीह का वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है, if you are clothed with Jesus, you have the privilege to sit on the table of God. तब आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है, and you can call God Abba and Father. We can see this concept in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Go to 2 Timothy, दूसरा तिमोथी, उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार. This is nothing to do with our good works. हमारा अच्छा काम की वजह से. Why God chose us? Not because of our good works. पसंद किया. Why God predestined us? Not because of our good work. Why God adopted us? Not because of our good works. But this is only and only called with a holy calling, not according, but वो कहता है, but to his own purpose and grace. उसका अनुग्रह और उसकी इच्छा के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है. Now go to Titus chapter 2 verse 11. Next chapter after 2 Timothy comes Titus verse chapter 2 verse 11. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है. This grace which is revealed, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. हर एक व्यक्ति के लिए यह अनुग्रह परमेश्वर का प्रकट है. How did God reveal this grace? By sending his son into this world. Right? जब समय पूरा हुआ, remember Galatians 4:4, time back to that same verse, जो कि adoption का जो foundation है, that जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, जो कि born of a woman, born under the law, to redeem us and to make us adopted in the family of God. वो कहता है, for the grace of God, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है. God did that.
by Jesus dying on the cross, साथ ही साथ he has given us this scripture. Remember, बिल्डू बहन का घर में हमने क्या देखा था? There is a general revelation of God that is revealed to all man. किसी को भी परमेश्वर के बारे में जानना है, they do not need to know that God exists. कि परमेश्वर है करके जानने के लिए you don't need this Bible. But to us, जिसने सुसमाचार सुना है, those who have heard the gospel, you have a special revelation of God. परमेश्वर ने आपका special revelation, and that is the word of God. ये वचन. So how is the grace of God is revealed? First of all, through the history. You can go back to the history and you know that the crucifixion and resurrection happened. साथ ही साथ through this book, ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है, you can read this book and you know about the grace of God. वो कहता है, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Read verse 13. Continue reading verse 12 and 13. और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए. So this is your responsibility. Remember, you get right and responsibility. When you are adopted, जब तुम्हें लेपालकपन होने का अधिकार मिला, in this new family you have certain rights and certain privileges. But you have certain duty that you have to do. What are your duties? वो कहता है that denying ungodliness and the worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present world. That is your present. Continue reading. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के. That is the future adoption. Right? Romans 8:23 में हमने क्या देखा? That this body is looking for the adoption. ये देह अपने छुटकारे की राह देखती है. Right? Read verse 14. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो. So अधर्म से छुड़ाकर, that was your past, परमेश्वर अपने लिए शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो कि परमेश्वर के काम करने में तैयार हो. We'll read the last verse in same Titus chapter 3 and we will conclude it over there. How can you be adopted in the family of God? कैसे आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन सकते हैं? This is the summary of it. Titus chapter 3 verse 5, 6 and 7, and that is where we will conclude. तो उसने हमारा उद्धार किया. किसने किया? Again, उसने, when Paul uses in he did it or in him, he is talking about Christ. उसने हमारा उद्धार किया. और यह धर्म के कामों के कारण. Again, Paul emphasizes this that this is not by your good works. ये तुम्हारा अच्छा काम की वजह से नहीं. It is purely and purely by the grace of God. Remember that beggar who is sitting with king on his table, robed in a royal cloak. He is only there because of that royal robe and by the grace of Christ. You can have all this spiritual blessing, ये सारी आत्मिक आशीषें only and only if you are in union with Christ. Otherwise no. अगर आप इस जीवन के अंदर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और उस यीशु को अपना उद्धार करता अपनाया हुआ है, if you are in Christ, you have the privilege to call him Abba and Father only if you are in union with Christ. जिस प्रकार वो beggar जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, if he is clothed with that royal robe that king gave him by the grace, यहां पर वो कहता है according to his mercy he saved us. कैसे बचाया? कंटिन्यू रीडिंग. जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें. So how you can be the child of God? How you can be adopted? Well, first of all, he says he saved us by the washing of regeneration.
right? So that washing has to do something that you need to be washed, either with the water or by the word of God. You have to be washed. In the scripture, you see that washing happens with the word of God. First of all, you heard the message of your salvation. तुमने अपना उद्धार का सुसमाचार सुना. You are washed by that word. वो वचन के द्वारा तुम धोया गया. If you read Ephesians 5:26, you are washed by that, and also you are washed by the water. Remember, Jesus said to Nicodemus, until and unless you are born again with spirit and water, जब तक तुम पानी और आत्मा से नया जन्म नहीं पाता, तब तक तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Paul is emphasizing the same teaching here in Titus 3:5. वो कहता है, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. These two things that has to happen. Renewing by the Holy Ghost. Read the next verse, verse 7, verse 6. जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला. Next one. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर. By the grace of God. अनुग्रह से हम, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार उसके वारिस बने. That is our inheritance. This is the future that God wants to give you and me. The past, the present, and the future. What was the past? We were the sons of wrath. We were the sons of darkness. We were the sons of Satan. Now in the present time, we are the sons of light. हम ज्योति के संतान हैं. We are adopted in the family of God. Through this adoption, we receive the promise of eternal life. हम अनंत जीवन के वारिस बनते हैं. What is the future of adoption? Romans 8:23. Through that adoption, this body is also crying for its redemption. इस देह के छुटकारे के लिए वाक ज्योति है. And that is what we saw in verse 6. हमने क्या देखा? It is only and only by the grace of God. That is all the spiritual blessing परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पाते हैं. Not because of our good work. हमारे अच्छे काम की वजह से नहीं. आइए अपने आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर मनन करें. Because this Lord's Supper has to do with the adoption. You need to be the child of God. अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बने हैं, then you can be the part of this Lord's table. तब आप उसके ये मेज, जो पवित्र मेज है, जो परमेश्वर की मेज है, उसके हिस्सेदार आप बन सकते हैं. If you are adopted, अगर आप वो लेपालक के, आप उसके पुत्र बने हैं. John 1:12 that says, वो क्या कहता है? As many as those who received him, God has given them the privilege to be his sons and daughters. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप उसका पुत्र और पुत्री बने. You can call God Abba and Father if you have received him as your personal savior. आप उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार किया हुआ व्यक्ति है जो परमेश्वर को पुकार सकता है Abba and Father. The third thing is that those who received him, God has given them the Spirit. परमेश्वर ने अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेला है. By that Spirit, you can call God Abba and Father. The foundation of our adoption is in the redemption. वो परमेश्वर ने जो हमारा छुटकारा किया, हम क्या थे, परमेश्वर ने उसमें से हमको निकाला, उसका प्रिय पुत्र का राज में प्रवेश करवाया. And I said the adoption comes with a responsibility and also certain rights. The responsibility is that if you are in light, then walk in the light. अगर तुम ज्योति के संतान हो, तुम उस ज्योति के अंदर चलो. Now you are no longer in darkness, you are in light. तुम उस ज्योति के संतान हो. Paul emphasizes, and all this thing is not by your own merit. आपका अच्छा काम की वजह से नहीं,
but it is purely the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है. How you can be the child of God? By accepting, receiving Jesus as a Lord and Savior, उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानने से, नया जन्म पाने से, by being born again. That experience has to happen in your life. आपके अंदर आपको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए to be the born again. मैं एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं. Just like we saw in Titus chapter 3 verse 5, उसके अंदर कहता है वो जल के स्नान से शुद्ध कर कर. और the second thing is sanctification by the Holy Spirit. परमेश्वर का आत्मा के द्वारा शुद्ध हुआ, वो आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति, until and unless you being born again by the water and by the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. तब तक आप उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते. आप इस मेज का हिस्सेदार अभी तक नहीं हुआ है तो परमेश्वर आज का वचन के द्वारा आपसे कहता है, you need to be adopted. परमेश्वर ने आपको अडॉप्ट किया, आपको लेपालक पुत्र होने का अधिकार दिया है. बट गॉड हैज गिवन दैट फ्री विल टू यू. परमेश्वर ने आपको अपना इच्छा दिया है, दैट यू फ्रीली चूज हिम, कि आप उसको अपनाएं. रिसीव हिम, बी वॉश्ड बाय हिज वर्ड एंड बी वॉश्ड बाय द वाटर. जल से शुद्ध होकर, उस आत्मा को पाकर, you become the partaker of this Lord's Supper. उसका पवित्र मेज का आप हिस्सेदार बने. That is the will of God. परमेश्वर की इच्छा यही है, all men to be saved. हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाश ना हो. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे. आमीन.